to get a first-hand account of the polling in Tripura. Kavita. সার্বিক পরিস্থিতি খুব ভালো আছে, খালি সবার খেয়াল রাখতে হবে এই যে আনহুলি অ্যালায়েন্স হয়েছে এরা এগুলো ইনস্টিগেশন করবে, চারিদিকে এই ধরনের বোমাবাজি করতে পারে এবং হচ্ছেও। এই ধরনের এদের থেকে আমাদের প্রশাসন যারা এখন আমাদের নির্বাচন কমিশন আছেন, আমি ওনাদেরকে বলবো বিষয়টা দেখার জন্য, কারণ এইগুলো বলেই আমাদের উপরে ওরা আরোপ সৃষ্টি করবে। কিন্তু আমাদের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে আমাদের যারা কার্যকর্তারা আছে আমাদের পার্টি, তারা কোনো অবস্থায় এদের ইনস্টিগেশনের জন্য ওদের ফাঁদে যেন পারা না দেয়। ত্রিপুরাবাসী কি এই উন্নয়নের ধারা এভাবেই বজায় রাখবে? 100% আমরা জিতবো। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, আমরা জিতবই। মানিকবাবু, ত্রিপুরাবাসী কি এই উন্নয়নের ধারা এভাবেই বজায় রাখবে? এর বেশি নিশ্চয়ই বজায় রাখবে, আরো বেশি করবো। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা। তাহলে কি গত বছরের তুলনায় এবছর মানে আসন সংখ্যা আরো বাড়বে। তাহলে কি একক গরিষ্ঠতায় একদম 100% আমরা জিতবো। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, আমরা জিতবই। বেশি নিশ্চয়ই বজায় রাখবে, আরো বেশি করবো। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা। We are going to have a confident majority. Your views on the role of EC today? EC, the boot center is all right, but they have completely, I think, misread the muscle power of the goons where the electors are being obstructed. And so just one last question, sir. How much do you think CPM Congress alliance can? We'll get more than the requisite number, much more than the requisite number. I am asking for a constitutional solution and rights for the people living in the autonomous hill areas, irrespective of caste, religion, creed, and community. So I fought selection on that plank, and I am very hopeful that the people have given chance to Congress, CPM, BJP. They will also give a chance to a local party from Tripura. Today we have, proof that the opposition tells too many lies. There is no democracy in Tripura, but today the voting is by and large peaceful. There was no big incident whatsoever, and people have been allowed to exercise the franchise as per their will. The people are voting happily. They are casting their votes in the hills also and in the plains also. So this is proof that people are happy. আমরা তো চাইছি যুব সমাজ যাতে বেশি করে ভোট দেয়, তাহলেই তার ভরাডুবিটা চূড়ান্ত হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে শুনুন, মানুষের মধ্যে তো একটা শঙ্কা সংশয় আছেই, গত 5 বছর তো ভোট হয়নি। কাজেই এবারকার ভোটে মানুষ দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ভোট দেবেন। একটু খোঁজখবর নিয়ে হয়তো বেরোচ্ছেন, এটা গড়ে বলছেন, কোনো জায়গায় তার চাইতে হয়তো বেশি হয়েছে, কোনো জায়গায় একটু কম হয়েছে। গড় হিসাবটা এই, আমার ধারণা যত সময় বাড়বে এবং মানুষের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যয়, তার সাথে বাধা দেওয়ার যে প্রচেষ্টা, একে প্রতিহত করার মানসিকতা আরো সুদৃঢ় হবে এবং এটা দ্রুত বাড়তে থাকবে। देखिए, कांग्रेस और सीपीएम का जो जोट है, ये लोगों के सामने, लोगों को क्लियरिटी नहीं। कभी बोलता है इनके साथ गठबंधन हुआ है, कभी बोलता है सीट एडजस्टमेंट हुआ है, और त्रिपुरा की आम जनता ने कभी सोचा नहीं कांग्रेस और सीपीएम एक साथ चुनाव लड़ेगा। ये आम जनता, त्रिपुरा में सीपीएम ने 25 साल राज किया, आज कांग्रेस ऑल ओवर इंडिया में डूबते हुए नहीं आए कि भाजपा को हराने के लिए ये दो दल एक साथ हो रहा है। ये 0-0 होने वाला है, कुछ नहीं। भाजपा का सरकार त्रिपुरा में बनने वाला है। 2018 से पहले त्रिपुरा के लोगों के पास हम लोग जब जाते थे ना, तब जो एक इच्छा लोगों के मन में, लोगों की आंखों में हम लोगों को दिखाई देती थी कि हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो 25 साल की शासन से। तो वही इच्छा, वही एक होते हैं ना, मैं 6 अगरतला कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो हमारे जो वोटर्स है, उनके आंखों में मैंने देखा जीत हमारी निश्चित है। एकदम रिकॉर्ड मार्जिन से हम लोग भारतीय जनता पार्टी इस केंद्र से हम लोग जीत रहे हैं, और मैं 60 नहीं बोलूंगी, मेरे ख्याल से अब 54-55 लेकर हम सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। तो त्रिपुरा चुनाव में सबसे बड़ी कवरेज में हमारी टीम ने एक के बाद एक दिग्गजों से उनकी राय लेनी चाहिए। जीत चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है उनका, वो हम आप तक पहुंचाने की हमने आपकी कोशिश की। इस बीच जहां भाजपा लगातार दावे कर रही है जीत के, वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप लगाती नजर आई चुनावी हिंसा को लेकर, और कहीं ना कहीं बाहुबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया भाजपा पर, जिसका भाजपा ने सीने से खंडन किया।
जी बिल्कुल कविता एंड this is something that we have been witnessed across the political parties. Every single party is confident of a victory, and if we talk about Manik Sarkar, the former chief minister, he is confident of a great show by the Congress CPIM combined. If we talk about Jishnu Debarma, the deputy chief minister, he too is absolutely confident that the BJP will once again storm to power. It will better its previous tally that it recorded in 2018. And of course, if we also talk about the Tripura Motha, they too have exuded confidence, especially its supremo, Pradyut Debarma himself, has exuded confidence that he is fighting for the rights of his people, and therefore there is no way that they will lose this battle, Kavita. जी बिल्कुल, जिस तरह का अंदेशा था कि मुकाबला दिलचस्प होगा, वो अब कहीं ना कहीं तस्वीरों में नजर आ रही है। दावे एक के बाद एक हो रहे हैं, राजनेताओं के जीत के, हर कोई जीत के दावे कर रहा है और इस बीच रोमांचक मुकाबला नजर आ रहा है। त्रिपुरा मोथा ने जहां एक बार फिर जनता से एक मौका मांगी है, त्रिपुरा मोथा चीफ प्रद्युत देववर्मा का कहना है कि जब आपने सीपीआई कांग्रेस को मौका दिया, भाजपा को मौका दिया, तो हमें भी मौका दिया जाए। जबकि भाजपा का कहना है कि हमने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ ऐलान किया है, हम आदिवासी का मूल रूप से विकास करेंगे। वहीं सीपीआईएम और कांग्रेस कह रही है कि भाजपा ने जितने भी विकास के दावे किए हैं और जो दावे कर रही है कि विकास हुआ है, वो कुछ नहीं, सिर्फ एक छलावा है। अब देखना होगा कि जनता ने किस पार्टी पर अपना भरोसा दिया है और जनता ने किस पार्टी को अपना समर्थन दिया है। 2 मार्च को इसका पता चलेगा, क्योंकि 2 मार्च को मतगणना होने वाली है। Absolutely, and as you very rightly pointed out, Kavita, apart from exuding confidence of a victory, there is also this blame game that is also going on between the top political leaders. The BJP is accusing the Congress of trying to stop voters from coming and casting their votes. The Congress also has the same kind of allegations regarding the BJP as well, while the Tripura Motha is still going on alleging that the BJP's development agenda, their main card on which they are contesting the elections, their development agenda is not translating on the ground. The tribal people especially have been deprived of the development that the BJP has promised. These are all things that the Tripura Motha is holding against the BJP, and they hope that this is what will ensure their victory in this crucial Tripura elections. जी बिल्कुल, मुद्दे कई हैं जिन पर जनता ने अपना वोट दिया है। 2018 की अगर हम बात करें रौनक, तो बीजेपी को चुनाव में 36 और आईपीएफटी को 8 सीटें हासिल हुई थी। कुल मिलाकर बीजेपी गठबंधन के खाते में 44 सीटें गई थी, जबकि पार्टी नेताओं का कहना है कि इस बार यह आंकड़ा और बढ़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Absolutely, ये बहुत ही बड़ा बात है, and this just goes to show how confident they are at this point in time. The BJP already performed very well in the 2018 elections, having stormed to power. It was considered unprecedented at that point in time, dethroning the CPIM government and coming to power. That itself was a great victory. However, the BJP is not satisfied with that, and that is clearly evident from the way that they have campaigned in the run-up to the elections. With all the top leaders, the top star campaigners, you have your Prime Minister Narendra Modi, you have your Defense Minister Rajnath Singh, as well as a NEDA convener and BJP's master strategist Himanta Biswa Sharma. All the top who's who of the BJP came down to Tripura and campaigned for the respective candidates. This just goes to show that the BJP is looking to better its tally and come back to power with a record-breaking victory in the polls. जी बिल्कुल रौनक, देखने वाली बात ये भी होगी कि कांग्रेस का क्या होता है, क्योंकि पिछली बार यानी कि 2018 में एक भी खाता नहीं खोल पाई थी पार्टी, लेकिन इस बार भी जीत के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। सुदीप वर्मन को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इस बार भी पार्टी जीत हासिल करेगी। तो देखना होगा कांग्रेस की स्थिति पर, क्योंकि पिछली बार एक भी खाता नहीं खोल पाई थी पार्टी। Yes, absolutely, Kavita, and we have more reactions coming in from some of the top leaders who are contesting this election. So let's take a look. Till now, it cannot be said that it is incident free. Incidents are taking place, but the people, they have been trying their level best unitedly to resist it, and they have been asking if they are not allowed to cast their vote, they would not allow others to loot vote and cast vote. So this is their demand. Determination is there. It is a very good sign, positive sign. How far? What is your view on the polling today? How has it been so far? Nice. BJP doesn't believe in democracy. They believe in muscle power. They believe in money power. They are obstructing, restricting the electors approaching the center. Many such incidents took place in many parts of the constituency, apart from the capital as of now.
the capital bearing some places in 7 Ramnagar constituency, like in Sangmura and other places, bearing those places, other than the capital is okay, peaceful. But in other parts of the state, especially in the south, Rishimugh, then where the former chief minister Dhanpur, where the Pratima Pratima Bhomik is contesting. Then in Mohanpur, one where Mr. Ratalan is contesting. All these other places where the goons have been uh, obstructing the electors for approaching the center. The police is as helpless, silent spectator. We have lost several complaints, but no action has yet been initiated against those hoodlums who are obstructing. In spite of that, we are going to have a confident majority. Your views on the role of EC today? EC, the booth center is all right, but they have completely, I think, misread the muscle power of the goons where the electors are being obstructed. And so just one last question, sir. How much do you think CPM Congress alliance can We'll get more than the requisite number, much more than the requisite number. हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं बीजेपी की प्रत्याशी जो पापिया दत्ता जो 6 अगरतला सीट से खड़ी हो रही है। पापिया दी, आज अभी तक जो है आपको कैसा लग रहा है माहौल, कैसा लग रहा है, कितना आपको स्ट्रांग फील हो रहा है? बिल्कुल, देखिए आज नहीं, पहले दिन से जब मुझे टिकट मिला, जब से मैं डोर टू डोर या कार्यक्रम में आ रही हूँ, हर एक जो वोटर से, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई है, सबके चेहरे में एक जो अलग एक आनंद मुझे दिखाई दिया। 2018 से पहले त्रिपुरा के लोगों के पास हम लोग जब जाते थे ना, तब जो एक इच्छा लोगों के मन में, लोगों की आंखों में हम लोगों को दिखाई देती थी कि हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, मुक्ति चाहिए 25 साल की शासन से। तो वही इच्छा, वही एक होते हैं ना। सीट की अगर बात करें तो इसको जो है सुदीप का गढ़ माना जाता है, इतने सालों से वो जीतते आ रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कितने चांसेस है, और ये कितना बड़ा चैलेंज आपको फील हुआ है? ऐसा कोई चैलेंज नहीं। देखिए 2018 में मैं तब महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, तब हम लोगों को पता था कि जो सीपीएम जो है ना, उनका जो सूर्यास्त कभी नहीं होता है। ये माटी बोलते थे, ये माटी सीपीएम की घाटी है, घर माना जाता था। पर तब मैं महिला मोर्चा के अध्यक्ष थी। आज जो पापिया दत्ता को आप लोग देख रहे हैं, बिफोर 2015 मुझे कोई जानते नहीं थे, जो सच्चाई मैं बोल रही हूँ। बिफोर 2016 जो युवा मोर्चा जिसने जो अध्यक्ष थे, आज जो चंडीपुर से लड़ रहे हैं, उनको भी शायद इतना कुछ कोई नहीं जानते थे। इवन हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट थे, एक्स सीएम जो विप्लव कुमार देव जी खुद हम लोगों को बोलते, मोटिवेट करते कि देखो पापिया, हम लोगों को कौन जानते थे 2015 पर। ये टीम विप्लव कुमार देव जी से शुरू करके जो पन्ना प्रमुख तक जो टीम हम लोगों ने तैयार की थी, वही टीम ने लोगों के मन में जो एक ध्यान थी, धारणा थी कि सीपीएम इस राज्य से कभी नहीं जा सकते, वो हम लोगों ने तोड़ दिया। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सर में बोलना चाहूंगी, हमारे यहाँ के जो 4 बार 5 बार के जो विधायक है, सीपीएम के साथ उनका अलायंस किया, ठीक है। मैंने देखा सीपीएम के प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी पे जाकर उन्होंने प्रचार किया, पर 4 बार के जो मुख्यमंत्री है मानिक सरकार जी, या जो सीपीएम के जो प्रदेश जो स्टेट सेक्रेटरी है जितेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस के इतने बड़े लीडर, आप माने आज के दिन के सबसे वरिष्ठ नेता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक, उनके लिए वो लोग क्यों प्रचार पे नहीं आए? मेरा ये क्वेश्चन है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ ना कुछ कारण। क्या जो लोग चोरी देखे, चोरी चुपके चलती थी ये सब चीजें, आज ये खुल्लम खुला हो चुका है। लोग इसलिए अलायंस जितना मजबूत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूती के साथ हम लोग अभी लड़ रहे हैं। सब हम लोग हैवीवेट है, हैवीवेट हर एक कार्यकर्ता है। We are joined by Pradyut Kishore Debbarma, who is called the Supremo of Tripura. Maharaj, thanks for joining us. Always pleasure to talk to you, Pinaki. Always a pleasure. Sir, how is the overall scenario? How are people? Relaxed, comfortable, very happy. We are winning. And are voters coming out? There was an apprehension. Yes, but voters are coming out, and a few gundas, a few mafias cannot stop 20 lakhs people, 22 lakh people from exercising the franchise. How many criminals are there? 100, 200, and how many voters are there? 2 million. They cannot stop the people. So, what is the main issue that this time Maharaj Pradyut Kishore is trying to bring before the people?
I am asking for a constitutional solution and rights for the people living in the autonomous hill areas, irrespective of caste, religion, creed, and community. So I fought this election on that plank, and I am very hopeful that the people have given chance to Congress, CPM, BJP. They will also give a chance to a local party from Tripura. We have been seeing that Maharaj was repeatedly saying that after this election, he'll take some rest, or maybe if he comes to government, he'll quit from politics. What is actually? I said that I will not take any political chair. I said that I am not going to take part in electoral politics, but I will always remain in Tipra Motha, committed till the time we don't achieve a constitutional solution. Till the time the constitutional solution for our people is not achieved, I'm not going anywhere. All I said is that I will not seek votes in the name of an MLA or a chief minister ever. My aim is to give something to my people and not become MLA or a chief minister or an MP. So there you have it, viewers. The top names in the Tripura election speaking to your channel Northeast Live, giving us a view of what's going on in their minds, what they expect from the voters, and how peaceful the voting process has been, how Tripura has turned up in large numbers to exercise its franchise. Kavita, at this point, I would like to touch upon something which is making waves in as far as this election is concerned, something which has been a big talking point. You know, we just saw Papya Datta, the BJP candidate from the Agartala constituency, speaking to Northeast Live. And, you know, for the uninitiated, looking at the woman, the lady speaking, you know, they would not be able to make out that what a daunting challenge she is up against from the way she was speaking. She was confident, she seemed unfazed. And, you know, for the uninitiated, they would not know that she is going up against one of the most popular Congress faces in the state, Sudeep Roy Burman. Kavita. जी बिल्कुल, सुदीप रॉय वर्मन वो शख्स है जिन्होंने 6 बार जीत हासिल की है इस सीट से और 7वीं बार जीत हासिल करने को लेकर भी काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। रौनक, एक और सवाल है, आपने सुना होगा पापे दत्त ने कहा कि सीपीआईएम और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन था वो ऊपरी तौर पर हुआ है, यानी शीर्ष नेताओं ने किया है, जमीनी स्तर पर इसका असर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए लोगों में नाराजगी है, इसलिए चुनाव प्रचार में कोई बड़ी नेता शामिल नहीं हुए और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इन दो पार्टियों को। जी रौनक, एक और बात है, त्रिपुरा के ट्राइबल इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और ये वही लोग हैं जो त्रिपुरा की राजनीति में सत्ता में कौन बैठेगा उसका फैसला करेंगे। आदिवासी वोट की यहाँ हमेशा से निर्णायक भूमिका रही है। ऐसे में त्रिपुरा मोथा जिस तरह के दावे कर रही है किंग मेकर होने की, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि गृह मंत्री कह रहे हैं, अमित शाह कह चुके हैं, भाजपा भी कह रही है कि इस तरह के दावों का कोई असर नहीं है, क्योंकि 12 बजते ही 2 मार्च के स्थिति साफ हो जाएगी और भाजपा बहुमत में आएगी। लेकिन लगातार त्रिपुरा मोथा ये दावे कर रही है कि किंग मेकर साबित होंगे प्रद्युत देववर्मा, त्रिपुरा मोथा और आदिवासी जो इलाके हैं उनमें रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती नजर आ रही है। रौनक, Absolutely, Kavita, and this is something that you very rightly mentioned. You know, this is something that has been a very big talking point. You know, the tribal people, the tribal dominated areas, that is what Tripura Motha, led by its chairman Pradyut Dev Burma, have been banking on. And we have gotten confirmed reports that brisk voting is underway in Tripura's tribal dominated areas. We've gotten reports that there is quite a brisk flow of a polling that is being conducted from the one Simna constituency, which is of course an ST constituency seat. And there, you know, there is a brisk voting going on, absolutely brisk voting. There has been no untoward incident that has been reported from there. And of course, Kavita, as you rightly mentioned, you know, the fact that the I beg your pardon, the Congress and the CPIM combined have not really put on much of a campaigning effort as compared to the BJP that has absolutely gone all out and brought in all their big guns. That is something that can well and truly cost the Congress CPIM combined dearly come the 2nd of March, isn't it? जी बिल्कुल, लेकिन मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। जनता का आज दिन था और जो कुछ करना था जनता को, जनता कर चुकी है। अब जो फैसला है वो 2 मार्च को आएगा। Absolutely, absolutely. The people are the king and they will decide the fate of the various parties as well as the 259 candidates who are in the fray in this crucial Tripura Assembly elections. For now, we will continue all the relentless coverage from polling day live from Tripura, but for now we'll slip into a very short break, viewers. Don't go anywhere. Live coverage from Tripura elections will continue right here on Northeast Live. Stay with us.
21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? Right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably, if we compare them to the previous elections, बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन How is your party going to fight this election? Are you confident? শিশুৱে সাধাৰণতে গাখীৰ নাখায় সেয়ে ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি গৰুৰ গাখীৰৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰিছো পতঞ্জলি দুধ বিস্কিট আৰু সেয়াও ময়দা কোলেষ্ট্ৰল আৰু ট্ৰান্স ফেট ৰহিত পতঞ্জলি দুধ বিস্কিটৰ এটা পেকেটত আছে 1 কাপ পৰিমাণৰ গৰুৰ গাখীৰৰ স্বাস্থ্যকৰ সোৱাদ News to keep you ahead. Evening Prime every day at 7 p.m. গৰম গৰম ৰুটি ৰেডি এই ৰুটিনো কি এডভান্টেজ আছে আশীৰ্বাদ আটাৰে তৈয়াৰী ইয়াত 4টা এডভান্টেজ আছে আশীৰ্বাদে 6500 আৰু অধিক বাছনি কেন্দ্ৰৰ পৰা কেহু বাছি লয় 3বাৰ টন্নকৈ সাফা কৰে হাতেৰে স্পৰ্শ নকৰাকৈ স্বাস্থ্যবিধি সন্মত পেকেজিং কৰে প্ৰয়োজনীয় পৰিপুষ্টি লাভ কৰে আশীৰ্বাদ এডভান্টেজ প্ৰতিদিন ট্ৰমাইটিসি ও বা মাত্ৰ 9 रुपीजত মিছৰ ৰকেট দি আৰে চাব আকৌ যাতে উৰি না যায় গৈ টকিয়াই ধৰিব 17 ৰ পৰা 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত কেৱল মিছো এপত Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably, if we compare them to the previous elections, बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन How is your party going to fight this election? Are you confident? News to keep you ahead. Evening Prime every day at 7 p.m. Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably, if we compare them to the previous elections, बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन How is your party going to fight this election? Are you confident? News to keep you ahead. Evening Prime every day at 7 p.m. Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably, if we compare them to the previous elections, बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन How is your party going to fight this election? Are you confident? News to keep you ahead.
Evening Prime, every day at 7 p.m. Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? Right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably, if we compare them to the previous elections, बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन How is your party going to fight this election? Are you confident? News to keep you ahead. Evening Prime, every day at 7 p.m. Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably, if we compare them to the previous elections, बीजेपी का नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट लाइव पर आप देख रहे हैं खास बुलेटिन। मेरे साथ मैं हूं दुलुमनी और फिलहाल हम शुरुआत करते हैं त्रिपुरा से। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी भी अधिकांश मतदान केंद्र में वोटिंग जारी है। शाम 4 बजे तक राज्य में 80% वोटिंग हो चुकी है। पूरे दिन त्रिपुरा में लोकतंत्र के महा उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया है। नेताओं से लेकर आम जनता सभी ने अपने घर से निकलकर वोट डाला है। इस दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत और सरकार बनाने का दावा पेश किया। सुनते हैं टॉप 10 नेताओं के बयान जो आज की सुर्खियां रही। পার্সেন্ট আমরা জিতবো। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি আমরা জিতবই। বেশি নিশ্চয়ই বজায় রাখবে, আরো বেশি করব। এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা। We are going to have a confident majority. Your views on the role of EC today? EC, the good center is all right, but they have completely, I think, misread the muscle power of the goons where the electors are being obstructed. And so just one last question, sir. How much do you think CPM Congress alliance can We'll get more than the requisite number, much more than the requisite number. I am asking for a constitutional solution and rights for the people living in the autonomous hill areas, irrespective of caste, religion, creed, and community. So I've fought this election on that plank, and I am very hopeful that the people have given chance to Congress, CPM, BJP. They will also give a chance to a local party from Tripura. Today we have, proof that the opposition tells too many lies. There is no democracy in Tripura. But today the voting is by and large peaceful. There was no big incident whatsoever, and people have been allowed to exercise the franchise as per their will. The people are voting happily. They are casting their votes in the hills also and in the plains also.
So this is proof that people are happy. আমরা তো চাইছি যুব সমাজ যাতে বেশি করে ভোট দেয়, তাহলেই তার ভরাডুবিটা চূড়ান্ত হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে শুনুন, মানুষের মধ্যে তো একটা শঙ্কা সংশয় আছেই, গত 5 বছর তো ভোট হয়নি। কাজেই এবারকার ভোটে মানুষ দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ভোট দেবেন। একটু খোঁজ খবর নিয়ে হয়তো বেরোচ্ছেন, এটা গড়ে বলছেন, কোনো জায়গায় তার চেয়ে হয়তো বেশি হয়েছে, কোনো জায়গায় একটু কম হয়েছে। গড় হিসাবটা এই। আমার ধারণা যত সময় বাড়বে এবং মানুষের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যয়, তার সাথে বাধা দেওয়ার যে প্রচেষ্টা, একে প্রতিহত করার মানসিকতা আরো সুদৃঢ় হবে এবং এটা দ্রুত বাড়তে থাকবে। देखिए, कांग्रेस और सीपीएम का जो जोट है ये लोगों के सामने, लोगों को क्लियरिटी नहीं। कभी बोलता है ये इनके साथ गठबंधन हुआ है, कभी बोलता है सीट एडजस्टमेंट हुआ है। और त्रिपुरा की आम जनता ने कभी सोचा नहीं कांग्रेस और सीपीएम एक साथ चुनाव लड़ेगा। ये आम जनता, त्रिपुरा में सीपीएम ने 25 साल राज किया। आज कांग्रेस ऑल ओवर इंडिया में डूबते हुए नया है कि भाजपा को हराने के लिए ये दो दल एक साथ हो रहा है। ये 0-0 होने वाला है, कुछ नहीं। भाजपा का सरकार त्रिपुरा में बनने वाला है। 2018 से पहले त्रिपुरा के लोगों के पास हम लोग जब जाते थे ना, तब जो एक इच्छा लोगों के मन में, लोगों की आंखों में हम लोगों को दिखाई देती थी कि हम लोगों को फ्रीडम चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो 25 साल की शासन से तो वही इच्छा, वही एक होते हैं ना। मैं 6 अगरतला कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो हमारे जो वोटर्स है, उनके आंखों में मैंने देखा जीत हमारी निश्चित है। एकदम रिकॉर्ड मार्जिन से हम लोग भारतीय जनता पार्टी इस केंद्र से हम लोग जीत रहे हैं। और मैं 60 नहीं बोलूंगी, अबाव मेरे ख्याल से अबाव 54-55 लेकर हम सत्ता में दोबारा आ रहे हैं। और ये आपने सुने नेताओं के दावे, और अब आपको सुनाते हैं नए मतदाताओं के बयान जिन्होंने पहली बार आज वोटिंग की। इस दौरान उन्होंने अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं के बारे में क्या कहा, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब फर्स्ट टाइम दे रही हूँ तो बहुत एक्साइटमेंट है कि कैसा होने वाला है, मतलब प्रोसीड्योर एंड ऑल। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारी ये फंडामेंटल राइट है कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करें टू द स्टेट, कि कौन हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने इन द स्टेट। एंड बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेवलपमेंट एंड फॉर एवरीथिंग इन द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज वेल एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, इसीलिए सुबह सुबह उठ के आ गए सब पूरे फैमिली के साथ। Being someone of my age group, I would say more jobs in the city. When I say jobs, just not government jobs, right? Private players should come up into the state as well. That would change the economic condition, the stature which we stand right now. And most importantly, I'd say no post-war violence. We have seen in last 2 elections, not only in 18, even 13. I'm old enough to remember all this. So that's all. What else? और आज 14,000 से अधिक ब्रू मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार से पहली बार इस्तेमाल किया। ब्रू समझौता होने के बाद विस्थापित ब्रू समुदाय लोगों को त्रिपुरा में स्थायी रूप से बसाया गया, और इस साल विधानसभा चुनाव में ब्रू मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। This is the first time that we have given the vote in Tripura. We feel very thankful to the government of Tripura and the government of India. क्या चाहते हो वोट देने के बाद में? Actually, now for the Blue settlement team, so Narendra Modi ji, he is helping us, giving us like monthly cash assistance 5,000 rupees and physical safety for 4,920 and for electricity 12,000 and for to construct 1.5 lakh and after 2 years that to set up all on self giving like 4 lakh rupees and per month we still got one person 17 kg of rice and Uzalos we have got, so we are very thankful. That's why we feel and we are convenient to give to BJP party. और वहीं त्रिपुरा में उप मुख्यमंत्री तथा चारीलाम से भाजपा उम्मीदवार ने हमारे सहयोगी जयदेव हजारिका से अगरतला में वोट डालने के बाद बात की। उन्होंने कहा कि राज्य में अब तक शांतिपूर्ण मतदान रहा और लोगों से उस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी बात कही। We are being joined here by Tripura Deputy Chief Minister Jishnudev Verma. Sir, a major chunk of voting has gone by, and some time back you also cast your vote today, sir. What is your view on today's voting, sir? How it has been? Today we have, proof that the opposition tells too many lies. There is no democracy in Tripura, bole. ठीक ना?
But today the voting is by and large peaceful. There was no big incident whatsoever, and people have been allowed to exercise the franchise as per their will. So this is the foundation of what democracy. Election is the biggest, not the most, but the biggest thing, the proof that democracy exists in this country and in Tripura. The people are voting happily. They are casting their votes in the hills also and in the plains also. So this is proof that people are happy. So there have been allegations of some incidents of violence today during the polling, like the Congress CPM are alleging that the BJP is trying to strong arm its way to victory. Some time back, we talked to Sudeep Roy Burman here itself. He said that there have been incidents perpetrated by BJP workers against the other candidates, including common people. What do you have to say on that? They may be stray incidents, but you can't mar the whole process by citing one incident. By citing one incident, you cannot say the whole process is bad. Can you? One man is bad, so the whole society is bad. This is not the way. And opposition always looks for an escape route. They always look for a back door where they can come out. No? Now, when they lose, they will say that there was no voting, there was nothing. Till now, they are saying it is good. I heard Manik Sarkar, also ex-CM, also speaking on one of these, social channels. He is saying it's quite good. He's making a few complaints here and there because he has to make them. As opposition, he has to make complaints to put the pressure. Otherwise, there was nothing significant in his complaints also. And why Sudeep Babu is saying, I don't know. Actually, in his constituency, the voting is peaceful. I've come here now. All the I spoke to the presiding officer. They are all happy with the voting. And this is a very big, center, vote center, in number 6. And I've been a voter for a very long time. We have seen what is violence during CPM time. During CPM time, what is poll violence we have seen. People have been, threatened not to come out of their homes. Cadres have pulled women away from the queue. All this happens in CPM time, but no such incidents happen now. So staying on that note, sir, how much of a challenge does the BJP feel from this Congress CPIM alliance? Actually, the press is hyped up too much because it is first time the CPM Congress came together. So in Tripura, which was the main, one ruling party, one opposition party, they came together. So you have hyped it up very much. See, they have to come and explain to the people why they formed this alliance. First, in 15 days, you cannot explain it. While BJP will explain how we have done our work. We will go on a positive note that these are things we have done, and in future we will do these things. Isn't it? But Congress and CPM will have to go every door and explain why we killed so many people of each other. If we are to form a joke, why did we do all these things? Kill so many people, murder so many people, and so many people were injured. Such drama of fight was going on for so many years, 40, 50 years. Why did they do it? And all that has to be explained to the people. And this is a non-starter. It won't start at all, this joke business. It is proved in Calcutta, in West Bengal, I'm sorry, and it's going to be proved here. Because in 15 days' time, you cannot explain all these things. People won't accept you just because you made a joke to oust the BJP, because there is no democracy. It's a very absurd, abstract idea. So Tripura Motha actually Tripura Motha is also posing as a challenge to BJP, sir. So the fact remains that that Tripuri votes also form a sizable chunk, and this time the Motha is targeting a large chunk of the Tripuri votes so that they can occupy the position of a kingmaker. What do you feel about that? They are thinking that the assembly constituency is like the ADC constituency. It is not so. The whole configuration of the ADC constituency and assembly constituency changes, isn't it? So they do have a role, but they do have a support base also. I want young boys, but very limited. It's a limited support base which they gather each time and come to Maidan, to the Astral Vivekan on the ground, and you people are very impressed that Athakuli look koreche. But for how many places? And what are the people who are coming? Why are they coming? Is it? When the chief of Motha one day says, I will not do politics. Next day he says, I'll do politics. Then he says, Tripura land. Then he says, no, Tripura land is not required. Constitutional solution is required. So what does he want? He doesn't know what he wants. He started with greater Tripura land. And today he's come down to constitutional solution. Tomorrow he may come down to nothing.
isn't it? So this is very So on that note, sir, since you mentioned Greater Tripura land, sir, do you how much of a factor do you think this issue of Greater Tripura land is in Tripura, especially among the Tripuri voters? in the tribal they are a little emotional, but now boys also educated. Is no more. You can't fool all the people all the time, isn't it? What is the difference between Tripura land and Greater Tripura land? Did Tripura land happen? Did it happen 5 years? It doesn't happen. 5 years they were in power with us, IPFT. Did we make Tripura land? If Tripura land could not. और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। Over 21 lakh voters. What will be the scorecard? Will Conrad Sangma get lucky one more time? Right now here at the Akhora border. This time, even though the cases of political violence have gone down considerably, if we compare them to the previous elections. बीजेपी का जो मेन इशू है डेवलपमेंट कार्ड्स पे जो वो खेल रहे हैं इस इलेक्शन। How is your party going to fight this election? Are you confident? দেশৰ প্ৰতিখন ঘৰেই মোৰ পৰিয়াল আৰু মোৰ প্ৰতিজ্ঞা হ'ল প্ৰতিখন ঘৰলৈ 100% বিশুদ্ধ সামগ্ৰী যোগান ধৰাটো পতঞ্জলি গৰুৰ ঘি কচ্চি ঘানি সৰিয়হৰ তেল মছলা কেশৰ আটা ডালি তথা চাউল আদি সকলো সামগ্ৰী পতঞ্জলিৰে ঘৰলৈ আনিব নিজৰ মৰমৰ শিশুটো আৰু পৰিয়ালক ভেজালকৰণৰ বিৰুদ্ধে পৰা ৰক্ষা কৰক News to keep you ahead. ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है और अब बढ़ते हैं मेघालय विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर की ओर। मेघालय में 27 फरवरी को होने वाली वोटिंग को लेकर प्रचार चरम पर है। बंगाल के बाद मेघालय में टीएमसी सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ममता के बाद पार्टी के दूसरे बड़े नेता अभिषेक बैनर्जी मेघालय में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। अभिषेक बैनर्जी ने आज ईस्ट गारो हिल्स में 2 रैलियों को संबोधित किया। अम्पति और विलियम नगर में रैली के दौरान अभिषेक बैनर्जी ने एनपीपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है। बंगाल के बाद 2023 में मेघालय से देश में सूर्योदय होगा। But like they say, that sun rises in the east